हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड you people are practicing problems, learning concepts. In this video, we are going to solve two questions of electrostatics taken from the book SPT. And in these two questions, we are basically exploring one simple logic. And yeah, that we will see here. So let's start with this question. Consider a uniformly charged hemispherical cell. What can you say about the direction of electric field at the points on the equatorial plane? So at this point, you have to talk about what will be the direction of electric field. फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आ सकता है वो ये कि चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं या फिर एलिमेंट्स लेकर देखते हैं, डायरेक्शन चेक करते हैं। बट या जो आप सोच रहे हो, चलो मैं भी वो करके दिखाती हूँ। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट दिया एंड दिस एलिमेंट विल बी अ स्मॉल एरिया थिंग। अगेन लेट्स से दिस इज अ पॉइंट चार्ज, सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड लाइक दिस and this will be directly proportional to charge value here but inversely proportional to the distance. And similar element if I take here, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? देखो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड दिखेगा एंड ये एलिमेंट थोड़ा दूर है, ज्यादा दूर है when compared with this one. So this electric field is going to be weaker. Let us call it E2, let us call it E1. So clearly you can say E1 is greater than E. And if you resolve these two components along uh, vertical and horizontal things, then you can clearly see that these two will have vertical components in this direction and horizontal component in this way. But these two horizontal components won't get balanced क्योंकि even ये तो equal नहीं है, है ना? So overall at point P आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी है, so somewhat इधर। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, दिस इज नॉट सिंपल हाफ रिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसके लिए आप डायरेक्शन इजिली कैलकुलेट कर लो। डन है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आई वुड से। सो आई मीन कैलकुलेशन से डायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा, वी कैन नॉट टॉक अबाउट व्हाट विल बी द डायरेक्शन, वी कैन यूज वन सिंपल लॉजिक। और ये लॉजिक ये है कि जैसे देखो हमारे पास अगर हमें अगर सेल हो, कंप्लीट सेल हो and if it has charge on its surface, you can clearly say that electric field inside क्या होता है? Zero, क्योंकि inside में कोई charge नहीं है, Q enclosed is zero. So for any point inside, electric field is what? This is zero. No matter if this is conducting or non-conducting cell, doesn't matter. Electric field inside is what? Zero. तो अगर मैं बात करूं इस इक्वेटोरियल प्लेन की एंड इफ आई टेक एनी पॉइंट इन हियर, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, देन बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट सेल एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? जीरो. सो बिकॉज ऑफ वन पार्ट इट विल बी हाउ मच? आई मीन वन पार्ट कहने का मतलब जैसे देखो इस सेल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, सो दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। ये दोनों पार्ट काफी सिमेट्रिकल है, एक जैसा है ना? एक टॉप पे रखा है, एक बॉटम पे रखा है, डिफरेंस बस इतना है। डन है। सो इन दोनों की वजह से, पार्ट वन एंड पार्ट टू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। डन है। एंड डायरेक्शन वाइज क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नेट। डन है। सो अगर पार्ट वन के लिए लेट्स से ई वन मैं बोलती हूँ, पार्ट टू के लिए ई टू बोलती हूँ, ठीक है? ई वन एंड ई टू का मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा? सेम है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, इट मीन्स आई मीन डायरेक्शन वाइज दे शुड बी व्हाट? दे शुड बी ऑपोजिट। देन ओनली, आई मीन दो वेक्टर अगर तुम्हारा इक्वल है, ये जीरो कब होगा? जब तुम्हारा इनके बीच का एंगल क्या हो? 180 डिग्री। और ऐसे भी दो वेक्टर को आप ऐड करके जीरो कब ला सकते हो? I mean, if they are equal and oppositely directed, then only, right? So yeah, at this point, this electric field is equal. So in order to produce E equal to zero, they have to be oppositely directed. सो बॉटम के लिए ये अप होगा, ई टू अप क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इसके लिए, तो आउटवर्ड कहने का मतलब क्या? यहाँ से ऐसा ही हो सकता है। डन है। एंड बॉटम टॉप पार्ट के लिए अगेन आउटवर्ड होगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन बी इन दिस वे। तो दिस कैन बी वर्टिकल। सो यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ दो एलिमेंट्स लिए थे, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट सिंपल स्ट्रक्चर कि ये एक ऑपोजिट दूसरा, एक यहाँ दूसरा इससे ऑपोजिट, एंड दिस इज लाइक यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। This is a sort of 3D structure. So we need to take elements carefully. And if we will do that, again, calculation wise also, we will be getting the same result, but we don't need to go there. And we can simply come out with this reasoning, this simple one. इसको आप कंप्लीट सेल ले लो, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जितना टॉप के लिए होगा उतना बॉटम के लिए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है एंड इट विल बी आउटवर्ड बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा एंड दैट आउटवर्ड कैन लुक लाइक दिस। Okay, so electric field at P point will be because of this thing in which direction? This direction. Horizontal components नहीं दिखने वाले, they will vanish. Okay, so this is this thing. Now let us talk about the second question. Consider a uniformly charged thin spherical cell as shown in the figure. Radius of cell is R. Electric field at point P is given as E.
ठीक है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट -x00? देखो इस क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो. जैसे अगेन सेम लॉजिक हम यूज करेंगे. ऐसा ऐसा आप कर लो, ठीक है. इसको कंप्लीट सेल में कन्वर्ट कर लो. अगर आप कंप्लीट सेल की बात करो तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो. डन it. Because of one part, it is given as E. So because of second part, at this point P, electric field should be minus E. Done it. Then only electric field value at this point P will become what? Zero. So because of bottom part at P point, electric field is what? Zero. But we are getting asked electric field at what point? At this point, -x00 because of this portion. Okay. So what will be that? अब देखो यहाँ पे आप एक काम करो. ये इस सिंगल पार्ट को एक्सप्लोर करो, बॉटम पार्ट को एक्सप्लोर करो. एंड ये जो पॉइंट है -x00, ये इसके बेस से कितने डिस्टेंस पर है? आप देख लो x डिस्टेंस पर. और यहाँ पे भी ये P पॉइंट इसके लिए अपर पोर्शन के लिए ये कितने डिस्टेंस पर है? बेस से x डिस्टेंस. एंड इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E. सो बिकॉज ऑफ बॉटम पोर्शन हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E, right? So, I mean, this will be E, but oppositely directed than that of what is at point P because of this upper portion. So, because of this down portion at this point is what? -x00. Electric field will be magnitude wise E, but direction wise it should be opposite. क्योंकि आप देख लो P point पे electric field should be outward like this. So, at this point, electric field because of this portion should be outward like this. Done it? So electric field will be -E. Magnitude wise same, direction wise opposite. Now because of top portion, what will be the electric field at this point? So that you need to explore now, क्योंकि वही हमसे पूछा गया है. So at this point, because of complete cell, electric field is 0. Because of bottom, it is -E. Because of top, it should be E. Done it? So electric field because of top thing will be E, and that is what is getting asked in the question. So answer here should be equal to what? It should be equal to E. I hope you have got this idea. This is very simple thing. I just wanted you to know this, or I just wanted you to go through this question. Nothing much. Okay. So I hope you've got it. But if you want to discuss anything, if you have any doubt anyway, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.